Forms and features of poetry. This is one of the most requested topic. Now, poetry is a form of artistic expression that uses words to create rhythm, imagery, and emotion. Let us discuss some key aspects of poetry first. Forms of poetry. Poetry can take various forms such as sonnets, ballads, and lyrics. Sonnet. Sonnet is a poem of 14 lines. Thomas Wyatt introduced sonnet in English literature. The Italian form of sonnet and English, these are the two forms that was introduced by Thomas Wyatt. Now the Italian sonnet has two parts, octave, that is the first 8 lines, and sestave, last 6 lines. Shakespeare composed sonnet in his own style. Shakespeare का अपना खुद का स्टाइल था sonnet कंपोज करने का. His sonnets contains 14 lines, that is 3 quatrains and a concluding couplet. उनके सॉनेट में 40 लाइन्स होती थी जिसमें 3 क्वार्टर्स होते थे और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता था. ठीक है, अब क्वार्टर का मतलब होता है 3 क्वार्टर्स का मतलब, यहाँ पर क्वार्टर का मतलब हो गया 4, मतलब 4 3s are 12 एंड कंक्लूडिंग कपलेट. कपलेट मीन्स 2 लाइन्स, सो 12 + 2 14. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. पुअर सोल और द सेंटर, दीज आर द 2 sonnets by Shakespeare. He said that people give more importance to the body than to the soul. इन सॉनेट्स में शेक्सपियर ने बताया है कि लोग बॉडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सोल से. आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे. Painting thy outwards wall so costly gay. This is a quote that you have to give. Now, men call you fairy, beautiful. This is a sonnet by Spenser. In this sonnet, the poet says spiritual beauty is far more important than physical beauty. Now, lyric. Lyric means a short poem that expresses a person's personal feeling and thought. For example, Marlowe in his lyric, the passionate shepherd to his love says, "Come live with me and be my love, and we will all the pleasures prove." Lyrical ballads की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. This was published by Wordsworth and Coleridge together. Ballads are about poor people. Language was simple. For example, alone she cuts and bind the grains. A voice as thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. The Reaper by Wordsworth. Ballads gave importance to freedom. Now some important features of poetry are. अब देखते हैं important features के बारे में. Rhyme, rhythm, imagery, metaphor, and theme. Now let us discuss each of them one by one. First, let us discuss about rhyme. Rhyme involves the repetition of similar sounds at the end of lines. For example, Robert Frost in the poem The Road Not Taken says, "The roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both." The words wood and both rhyme, adding a musical quality to the poem. अब यहाँ पर जो rhyme होता है, rhyme जो है वो musical quality create करने की कोशिश करता है by using similar sounds at the end of the lines. Now let us discuss about the rhythm. Rhythm refers to the pattern of stressed and unstressed syllable in a poem. विलियम शेक्सपियर एम्प्लॉयड आयमिक पेंटामीटर. अब रिदम जो है वो एक पैटर्न दिखाता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का और विलियम शेक्सपियर अपनी ब्लैंक वर्स में काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं किसका, आयमिक पेंटामीटर का. आयमिक पेंटामीटर एक रिदमिक पैटर्न होता है 10 सिलेबल्स का एक लाइन में और उनका एक प्ले है और सॉनेट है. उनके प्लेज और सॉनेट बहुत सारे हैं जिसमें उन्होंने आयमिक पेंटामीटर का यूज़ करा है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग. इन सॉनेट 18 ही राइट्स, "Shall I compare thee to a summer's day? The pattern of da-dum, da-dum, da-dum creates a pleasing rhythm." Now let us discuss about the imagery. Imagery refers to employ descriptive language to create vivid imagery or mental pictures. For example, Langston Hughes in his poem Dreams says, "Hold fast to dreams,
For if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. अब देखिए इमेजरी किस तरह से रिप्रेजेंट करी गई है इस पोएम के अंदर हम लोग बात करते हैं. जो द इमेजरी ब्रोकन विंड, जो ब्रोकन विंग है, जो वर्ड है हमारा यहाँ पर ब्रोकन विंग, वो एक इमेजरी के तौर पे यूज़ करा गया है कुछ इस तरीके से कि बिना सपनों के कोई इंसान वैसा ही है जैसे कि एक चिड़िया होती है बिना पंख के जो कि उड़ नहीं सकती. द इमेजरी ब्रोकन विंग बर्ड एनहांसेस इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द पोम. Now, metaphor. Metaphor compares two different things by stating that one thing is another. For example, Maya Angelou in her poem Still I Rise says. अब मेटाफर क्या करता है, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल माया एंजेलो की एक पोएम है स्टिल आई राइज, वो उसमें कहती हैं यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, यू मे कट मी विद योर आइज. ज़रा इसको समझते हैं. वर्ड्स लाइक आइज आर यूज्ड एज वेपन्स. यहाँ पर जो आइज है वो वर्ड, जो आई वर्ड है वो एक तरह से यूज़ करा गया है वेपन के तौर पर, विच गिव्स इट मेटाफोरिकल इफेक्ट एंड एड्स पावर टू दी पोएम. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लास्ट theme. Theme refers to the central message or idea explored in a poem. For example, in Robert Frost's poem, The Road Not Taken, the theme is significance of individual choices and their impact on life's journey. Now we are going to conclude. To conclude, different poets use a combination of these elements of forms and features of poetry to create unique and impactful works. That's all. Thank you very much. In the next video, we are going to discuss about the Sublime by Longinus.